So right now I'm going to discuss about who are going for the appear for this your assistant director exam for Govt of Gujarat. So this is the dedicated session for them, right? And in first session of this demo, today I'm going to talk about the new IBR Act 2025 and from where this journey has started, why this has started, and right now I'm going to also with the practical case study. I'm going to brief this entire with the content, right, which is going to be much more helpful for your exam who are going to appear for that. So this is the purpose of this session, and in this series I'm going to take two demo sessions. So today this is our first session, and next I will update the date, right? And in that session I'm going to discuss about the types of the tube failures, right? What are the mechanism, what are the symptoms of that, so that all the brief I'm going to add in that session, right? But basically today I'm going to talk here that who are given the first paper, that GS paper. So I must congratulate to all aspirant of this assistant director exam, and my best wishes to him, right? And something I'm going to share some good news to all of the aspirant that this year might the vacancy is going to be increased as I got the news from the update from the bowler office. So definitely every participant, right? They feel energetic because this is what we can say very precise opportunity you have got, right? Many people, they are waiting for this opportunity to sit to give the exam for the border inspector, right? And just wait for this completion of this session. I will brief you that how this position is so much important, right? One is its practical aspects, right? That so much the technical thing, so much of the IBR rules are applicable, forms are there, right? And apart from that, also you have to much more responsible for the safety concern. Okay, so please just with me, please complete the entire the session of this. What we are going, I'm going to deliver you in the next of 2 hours, right? And please feel free, right? Anytime whatever you have the question in your mind, right? Just anytime you can ask it, right? Okay, so you are free, okay? Don't hesitate to asking the question, okay? So this is my first tool for this session. Don't hesitate, don't wait, right? That, oh, I will put this question after the session. No, not at all, right? Because I feel that all the session must be one to one, might be the something you have observed, right, with your experience. Okay, something what I have observed with my experience, what right now I'm doing the inspection and doing the lots of the training sessions everywhere. Okay, so it means this is going to be propagated in the two way, right? Something what you have learned, it is correct. What you have observed or what you have think, that all will be definitely going to be value addition for this exam also, right? Because this paper is I think very much important. First paper, I say this is going to be the average to all, right? As the main participants already connected with me, and one more, I'm going to update that last to last year also I have given the session, but very few people I have chosen, right? 5 to 6 people I have chosen, which they are very close to me, and they insist that I can do it, right? So and that time I get the good result, right? Out of the five, I got the two people who clear the Gujarat assistant director exam, but I say that time there is only one seat in the technical, right? Technical. So they direct report to the chief inspector of border, and that is in the general category. That time there is only one seat was there. So my participants are just in the waiting, right? But they reach at that level, right? They reach at that level. So from there uh, preparation and the way I have done it, right, with the grace of God, now I think that I have to spread this all the things what I have learned
from you also, you people also, right? So definitely if somebody is going to be somebody, they are going to take the advantage, and suppose they are going to be crack this valuable exam, that their family, their all their parents definitely make the proud to all of you, or on you, right? So this is very precise time, right? And already if you have the books, right, then it is okay. If you are not having the IBR latest book, just update to me, because the publishers, they have every year they send few books to me, right? So I have some books that I will share you on the free of cost. 3 and 4 books right now I am available with me. So if you need it, right, I will give you on the free of cost. Don't I'm going to charge anything, right? So let's start the session, okay? Before going to start the session, just I would like to little bit know to all of you also, so that it is very convenient to me to give the examples of the relevant with the industry, right? Suppose somebody will have the exposure of the PF5 bowler, somebody will have the exposure of the medium size of the bowler, right? So then it will be the much better. So just I'm going to what I can say, just little bit I want to know to all of you, just so that I start the session. Yes, so first I would like to start with the alphabetical. So yes, the Antocteron. Yes, you are very close to me, and welcome, sir, that you joined the session. And I'm just give you your introduction to all of my people, all of my participants. That sir is already the border inspector. He belongs from the Assam. So little bit, sir, share your experience, sir. Yes, Teron, sir. Few minutes. Then I moved to the Chintan. After that, Jamin, then Himanshu, and then we move to the Utsav. Yes, are you available, sir? Yes, Terong. Okay, so now just move to the yes, Chintan. Yes, Chintan. Good evening to all. Myself Chintan B. Patel. I have total 14 years experience in AFBC boiler. Currently, I working in food industries, ISKCON Balaji in Gujarat, and my BOE pass out in 2016 in Gujarat Boiler Board. Right. So yes, you have applied for this exam, right? You have given this first paper. Yes, sir. First time I will appear. Okay, and you are currently working with Food industries food as a industry, boiler in charge. boiler Yes, engineer, food industry. What is the capacity of your boiler? 30 ton. Sorry, pardon me. 30 ton 30 ton. into two. Okay. Okay, great. So this is my best wishes to you, Chintan, right? That give Thank your best, whatever we have the time, right? This time is very precise, right? Don't miss this opportunity. What you feel, right? You just update Yes. to me. Definitely, I will help to you. Okay. So next, I will Okay. move. Thank you, sir. This is what we can say the introduction part. So quickly, I'm going to the in the alphabet. I'm going to complete the introduction part. Then yes, I think yes, Ankur. Yes, Ankur. Quickly, a little bit give your brief introduction about yourself, about your boiler. Quickly. Sir, my name is Ankur Patel. I am working in Mangal Textile Mill, Ahmedabad, Vatwa GIDC. Your voice is very low. Yeah. Yes, Ankur. Sir, I am working in Mangal Textile Mill, Ahmedabad, Vatwa GIDC. And boiler capacity is 37 TPH boiler and 25 kg per centimeter square pressure. Okay. So once again, my best wishes to Ankur that definitely this stands. You just clear it, right. Previous years we have
open the door, but this time you open the door and take your seat. So my best is with you. Okay, Okay, thank you, sir. Thank you. okay, welcome. Next we move to the yes, Avej Mirza. Quickly, yes, Avej. Good evening, sir. Yes, good evening, Avej. Quickly. Uh, yes, sir. My name is Avez Mirza. Oh, I have done my education in MTech Thermal Engineering. Currently, I am working as a assistant manager in food industry. My boiler capacity is 48 ton. It is working on normal pressure 17.5 kg per centimeter square. Thank you. Okay, so where right now? Sir, I am from Madhya Pradesh, MP. Okay, okay, okay. Great, 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 great. Yes, just 1 minute means the next. Yes, by the alphabet. Yes, Anput and Chintan already done. Yes, Jamin. Yes, quickly. Hello. Yes, sir. Yes, Good evening. yes, Hello. Blue Jamin. Yes, yes. Good evening. Myself, Jaimin Patel. I have done my BOE in 2023. Currently, I'm working with a dyestuff and chemical industry. My I'm working with AFBC boiler, capacity is 25 TPH and 30 TPH. The working pressure is 17.5 and 10.5. Okay. Thank you, sir. Welcome, welcome, welcome. All the best to you. Then we move to Thank you, sir. yes. Then we move to yes, Himanshu. Quickly. Yes, please, Himanshu. Yes. Then we move to the Nidhi. Quickly. Then Vipul and Utsav. Quickly give the introduction so that we complete this part and move to the detail of the session. Working Vipul Mulia, working at Tata Chemicals Limited, Mithapur, and 136 TPH boiler, 105 kg per cm square pressure, PF boiler. Yes. So when you have done your BOE, yes, Vipul, you have done your BOE. Okay. Next, move to the Utsav. Uh, Good evening, sir. My name is Utsav Godadra. I am currently working in Nabha Power Limited. It is supercritical boiler with Sorry. 2300 TPH boiler. Okay. Okay. So you, Utsav, you have applied for this. What we can say for the Gujarat Assistant Director Yes, exam, sir. right? Yes, Okay. So you have given the first paper, right? yes, sir. Okay, okay, okay. So just I would like to know that I think how many of you have just write in the chat box who has done the applied and given the first paper quickly. Just write your name in the chat box. Okay, Utsav. Quickly, just quickly so that I can move to the main part. Okay, Chintan. Great, Jamin. Ankur. Okay, okay. Yes, Bipul. Okay, okay, okay. Great. Okay, so thank you to all. Thank you. Just right now, I'm going to start this the detail session. So today we are have the topic. Yes. हाँ बोली जमीन. Nothing, sir. It's by mistake. Sorry. कोई बात नहीं. Continue, please. Okay. So this we part. Yes. Just we are going to complete just one more.
Yes, Sonesh, just to give your introduction. Okay, okay. So right now I'm just going to start the session here, right? So just with me. So hopefully that the slide is visible. Okay, just little bit update to me. Yes, slide is visible, right? Yes, sir, visible. Thank you for your input, right? Okay, so welcome to all. Myself Dinanath Akela. I am IBR competent person. I am also the certified the POE trainer, energy manager, lead auditor, and the state advisor of the Gujarat State for Power Sector Skill Council. So today we are going to talk about the IBR regulation compliances, right? Uh, what is the important feature of IBR Act 1923, just which is right now the change with the new Boiler Rule 2025, then the Boiler Act, right? And what are the penalty and breaches are associated with that, right? But before moving off in much of the detail, first we are going to start that where this entire journey of the border legislation has started. So this is a story going to start from when the industrial revolution has started in 1769 to 1775. The first time the James Watt improved the steam engine, and industrial revolution has going in higher way. And after that, in 1863, there was the very serious explosions occurred in the Calcutta suburban area, and huge losses of the life occurred. So, with the lesson of that explosion, the Bengal Act 6 passed for inspection of the steam boiler and prime mover in the town and suburban of the Calcutta, right? So after that, in 1920, the central government appoint a committee that is called the Boiler Law Committee, and this we can say that this is the our boiler legislation has started, right? Okay, so they what they have done, the report for the general question of the boiler legislation in India, and this committee, right? This committee is further move and prepare the first draft structure of our boiler act. So that's why before of 2025, last 100 years we are follow the boiler act 1923, and this is the entire story behind the structure and frame out of the 1923 act, right? Then we move for further. In 1935, the government India, they assign the subject of the boiler in the concurrence field, and they establish one board, right? That board recently we call it the boiler board, central boiler board, right? So they are board is exercise the power conferred under the section 8, sorry 28, right? So what are the here mention is 28, right? So 28, section 28 means that is the part of you will get the all the detail what are the section 28. So section 28 you will get the detail in your boiler act 1923 or new boiler rule 2025 in the section 28. So section 28 said that the formulated regulation on boiler, the current version of this regulation, that is called the
1950, right? So that have approved in 1950, and in consequent, in 2025 new boiler act has been passed by the both houses in April 25. So now we called the new boiler rule, right? New boiler rule 2025. So right now there is no any more existence of the boiler act 1923. 1923 act now come as the new version, or a new, what we can say, in the new segment we call it the boiler act 2025. Okay, clear, right? So here we have used one term that is called the central boiler board. So what the purpose and what the function of the central boiler board? Because this is what we can say the origin. The central boiler board in India is the origin for the your legislation part, right? Legislation part means they have only the authority in India that can make the rules, regulation, compliances, right, for entire बॉलर फर्टिनिटी अक्रॉस द पैन इंडिया। ठीक है, मतलब सेंट्रल बॉलर बोर्ड को ही वो पावर है, अथॉरिटी है कि जो बॉलर के लिए रूल्स रेगुलेशन बना करके उसको फॉलो कराएगा और उसको इम्प्लीमेंट कराएगा पूरे भारत में, राइट? और व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दैट? सो बोर्ड फॉर्मुलेट द इंडियन बॉलर रेगुलेशन incorporating the latest development take place in boiler industry all across the world. ठीक है ना? So the reason behind to establishment of the rules that we have used the advanced and the latest technology. First thing, that make boiler more safer, reliable and productive. ठीक है, तो उनका जो रेगुलेशंस बनाने के पीछे जो रीजन है वो है ये कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और वो सेफर होगा, मतलब कोई उसमें एक्सप्लोजन्स और एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी, राइट? सेफर होगा, ठीक है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा एंड रिलायबल. सेकेंड वी कैन से द प्रोडक्टिव. प्रोडक्टिव मीन्स मोर एफिशिएंट. Okay, but still we face the huge boiler explosions. Here I have just shows the few names. Just here I have shown the few names, right? Okay, so why and what are the reason of these explosions, right? Naveli boiler blast recently. Can anybody tell me what is the recent boiler explosion in our country? Can anybody tell me quickly? Yes, quickly. Anybody can tell me what is the recent boiler accident in our country? Quickly. Yes, anybody? Vedanta. Yes, Vedanta. Right. So, what was just one line answer I would like to know. What was the failure or what is the learning from us? उसमें क्या फेलियर हुआ, क्या क्या चीज मिस्टेक था जिसकी वजह से that major accidents occurred? Quickly. Accumulated fuel. Sorry. Accumulated fuel inside the boiler furnace. Inside the boiler furnace. And second thing, the practices is going on entire the purified boiler is about the double poking, है ना? बहुत सारे अभी अभी you are also related with the purified boiler, okay, right? So वहां पे क्या होता है, जो डबल पोकिंग का जो मेथड तो यूज कर रहे हैं ना, that also creating the huge and sudden fire creating the main reason to occur inside the huge development of the pressure. And what we can say for that, what could be the happen, the rupture of the tube failure hoga, and from that kya hoga, huge amount of the water is going to be instantly going to convert into the steam, right? Correct ki nahi? Okay.
right? Which is 200. 1 minute, sir. 1 minute. Jaimin, Mr. Jaimin ji, please off your mic, please, Jaimin. Yes, Jamin, please off कर दो. Right. Okay. Right. So why I'm going to show this picture? First, the thing is about that now you prepared mentally that you all are the boiler inspector. From day now today, everybody who are going to appear for this your written exam, now you feel that you are the boiler inspector. First thing, right? And for you, first and foremost thing is the your safety, right? So how we can save the people, how we can save the this entire the boiler, okay? So in that periphery, right, the Indian border regulations that is going to provide for the safety of life, limb, and property, create the board for rules, border rules for serve the society, formulate the rules regulation for safe and proper construction, installations, repair, and operation of boiler, fired or unfired boilers vessels, provision for the examination and appoint of the boiler inspector, provide the inspection of the boiler unfired and pressure vessel, the fees to be charged to the report made thereof, provide the concurrent enforcement of the rules, regulations formed by the board, provide the inspection certificate, and provide for the appeal also. Now I'm going to in brief of all of that, right? But before moving, the few things is very important. Because these few things is also very much important for your interview part, right? That they will put the very simple terms that is called the accident. So as the word accident, as per IBR Act 2025, it is mentioned that means the explosion of the boiler or boiler component which is calculated to weaken the strength or uncontrolled release of steam or water, therefore is liable to cause the death or injury to any person, damage of property, right? So this is the proper definition of your accident, right? तो जहां पे भी हम बात करेंगे accident means these things are associated with this entire process. Board means always we are going to talk the central boiler board which is under the section 27A or 28 जो अभी हमने बताया, ठीक है? Then boiler component means the steam piping, feed piping, economizer, superheater, any mounting, any fitting or any external internal part of the boiler which is subjected to the pressure exceeding the 1 kg per centimeter square gauge pressure. अगर कोई भी component है जो 1 kg से ऊपर हो रहा है, then that we can say the your boiler component. Chief Inspector, Deputy Chief Inspector, Inspector means a person appointed by the Chief Inspector, Deputy Chief Inspector or Inspector under this Act. कहीं कहीं पे right now some states they are following the words of the inspector, right? And in some state they are going to follow the word of your assistant director, directors, and chief inspector of the director or DOB, director of boilers. Like the example of the Gujarat, here we are going to talk the we call the DOB, director of boilers, DOB, right? But in some cases, just for example of the Jharkhand and the some other states, they are follow the chief inspector of boilers. Okay, but the position and the work power both are the same. This is only the change of the name that also depends upon the state to state. Competent authority means the institution recognized in such a manner they may be prescribed by the regulation for issue the welder certificate. So, can anybody tell me what is the welder certificate? What form we are going to issue for the welder certificate quickly? If we talk that who welder certificate, ये भी छोटे छोटे MCQ में आ जाते हैं कि भाई who is going to issue the welder certificate.
सो यू जस्ट चूज द वर्ड्स, उसमें ऑप्शन रहेगा आपका बॉयलर इंस्पेक्टर, राइट, देन competent person, competent authority, right, or say your deputy director, right. So क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या है? जस्ट एनीबडी टेल मी क्विकली, यस क्विकली, what could be the correct answer? What could be the correct answer? Who is give the फॉर्म? और उसके लिए जो फॉर्म रहता है फॉर वेल्डर सर्टिफिकेट के लिए जो फॉर्म रहेगा दैट इज योर फॉर्म 13, ठीक है। तो वो तो पता हो गया कि भाई उसके लिए आपको फॉर्म 13 लगेगा, लेकिन फॉर्म 13 पर हु इज गोइंग टू साइन, किसकी साइन होगी? ऑप्शन है चीफ इंस्पेक्टर बॉयलर, डिप्टी डायरेक्टर, कंपिटेंट अथॉरिटी और कंपिटेंट पर्सन। यस यस, तेरंग, अंकुर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। देखो Competent authority. तो जिन्होंने बोला दैट इज करेक्ट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक और के पास वो अथॉरिटी है, बट हु इज दैट? वो तो अभी हमने बताया ही। यस क्विकली क्विकली, कौन है उसके अलावा? Office of Director of कॉम्पिटेंट Boiler. पर्सन और Yes, correct, Ankur, and correct Terong. So thank you. Competent authority तो है ही, right? And your state CIB. If you are going to follow the name of the CIB, then CIB, या आप उसको DOB बोलते हो तो DOB. So these two person have only the authority who can sign the फॉर्म 13। सो फॉर्म 13 क्या है? आप किसी भी राइट नाउ आप आज के बाद किसी भी आप सपोज यू आर ऑन द फील्ड और कहाँ पे भी IBR का वेल्डिंग चल रहा होगा, सो आप उसके पास से वेल्डर सर्टिफिकेट पूछना एंड यू विल सी कि उस पर क्या होगा, केवल और केवल उस स्टेट्स के CIB का ही या DOB का ही साइन होगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर गुजरात द BH पटेल सर, राइट नाउ द BH पटेल सर द वी कैन से द DOB हैं, तो उनका साइन होगा, या जो पहले भी जो DOB थे जैसे इसके पहले शासर थे, ठीक है, तो शासर का होगा और एज सो ऑन, ठीक है। सो नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सम इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो देयर लाइक द TUV नॉट है, वीरो वेरिटास है, सो दिस इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड द कंपिटेंट अथॉरिटीज, कंपिटेंट अथॉरिटी। सो उनका भी जो QC का जो हेड डिपार्टमेंट है, दे हैव द अथॉरिटी ऑफ दैट। एंड वन मोर थिंग, चलो उसको आगे में भी मैं बताऊंगा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको बोला जाता है कि बाय डिफॉल्ट वो अभी आएगा, बट अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो आई कैन इन द फ्लो ऑफ दैट मैं बोल देता हूं। बाय डिफॉल्ट एवरी स्टेट्स CIB और DOB इज कंपिटेंट अथॉरिटी, है ना। वो बाय डिफॉल्ट कंपिटेंट अथॉरिटी है किसी भी स्टेट का, तो वो कर सकता है, ठीक है। एक इसमें और टर्म्स आता है कि द डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ बॉयलर या इंस्पेक्टर ऑफ द बॉयलर, बाय डिफॉल्ट दे आर द कंपिटेंट पर्सन, है ना। एक है कंपिटेंट पर्सन, कौन है? हु हैज क्लियर द एग्जाम organized by the Central Boiler Board, right? Okay, and they have their own what we can say, I will show my authority card, ठीक है। तो वो लोग क्या है, competent person, they can do the inspection and certification of the boiler, ठीक है। बट जो स्टेट्स के जो इंस्पेक्टर बोलो या असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर जो हैं, दे ऑल्सो बाय डिफॉल्ट दे आर कंपिटेंट पर्सन। उनको उसके लिए एग्जाम देके क्लियर करने की जरूरत नहीं है, राइट। चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट, ठीक है। यस, नाउ हियर जस्ट आई वुड लाइक टू स्टॉप टू यू, बट आई वुड लाइक टू नो दैट कि ठीक है भाई, हमने इतना सारा बात किया, बट व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द योर बॉयलर? सो हु इज गोइंग टू टेल? कौन बताएगा व्हाट इज द
definition, actual definition of the boiler quickly. Yes, quickly. जो आपको भाई, yes, उत्सव and the Chintan, yes, Nidhi, Vipul, what do you think about what is the definition of the boiler? Quickly, jaldi. Yes, Himanshu, Jamin. गलत हो, देखो मैं एक चीज मैं अपने ट्रेनिंग में बोलता हूँ, और जो भी मैं ये करीब 7-8 साल से मैं कर रहा हूँ, बीओई का कर रहा हूँ, एनर्जी मैनेजर ऑडिटर करता हूँ, आईबीआर का करता हूँ, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, भाई यहाँ पे गलती होगा चलेगा, हियर वी आर डूइंग द प्रैक्टिस, बट एग्जाम में गलती होगा, सो दैट इज द लॉस। बेटर है कि हम यहाँ पे हाथ साफ कर लें, यहाँ पे प्रैक्टिस कर लें उसको। तो जो व्हाट यू थिंक, जस्ट यू स्पोक, यस बोलो जैमिन क्विकली। It's a closed vessel that contains 22.75 liter capacity, which हाउ is मच, which हाउ is मच? partly or 22.75 liter capacity. नो 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 नो, ये ही चीज लड़के गलती कर देते हैं। ये 22.75 लीटर का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये मेरे को जस्ट मेरे को रिमाइंड करना पड़ेगा, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछूंगा कि ये पहले था, एक अमेंडमेंट के बाद नाउ इट इज चेंज्ड। It's 25 maybe. 25. Yeah, right now, 25. it is 25 liter. How much? 25 25 liter. liter. Quickly, okay, move on. It is wholly or partly under pressure when if the boiler steam ball is closed. This is called a boiler as per IBR law. ठीक है, anyone else want to add something जो इसमें कुछ करेक्शन है? Yes, anybody? Yes, Terong, Ankur. Pressure greater than 1 ksc and temperature greater than 100 degrees Celsius. Absolutely, absolute. तो ये तीनों कंडीशंस वी हैव टू फुलफिल। बट चलो इस पे बात कर रहे हैं ना, तो इससे थोड़ा सा और हटकर बात करते हैं, थोड़ा सा और डिफरेंट बात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, if you remember the big hotels or big hospitals, they have the small boilers, है ना, उनके पास क्या होता है, स्मॉल बॉयलर्स होता है। सो कैन, what is the criteria of the small boiler that come into the category of the IBR? Quickly, कौन बताएगा? जो स्मॉल बॉयलर्स की जिनको हम डिफाइन करते हैं, उनका आईबीआर के अकॉर्डिंग व्हाट इज द, मतलब कुछ तो बाउंड्री होगा ना, क्या है वो बाउंड्री? यस, एनीबडी? One is capacity and the pressure. हाँ, बट व्हाट इज द करेक्ट डेटा, मतलब क्या वैल्यू, क्या है, कहां पे? यस, क्विकली, एनीबडी? 25 liters and 1 kg. नो 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 नो, ये तो जनरल आ गया, ठीक है। इसमें आपका जो भी पावर बॉयलर्स भी आता है, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स भी आते हैं, सारे आते हैं, बट आई एम गोइंग टू टॉक फॉर द स्मॉल बॉयलर्स, एसबी, जिसको कंसिडर किया जाता है एसबी में। यस अंकुर, हैव आपने थोड़ा पढ़ा है इसके बारे में? below 7 kg per centimeter square pressure and 500 liter capacity below. यस, करेक्ट। तो वो जहां पे क्या है, राइट नाउ द बिग होटल्स, है ना, जो बड़े बड़े होटल्स हैं, तो वहां पे भी क्या है कि भाई दे आर सप्लाइंग द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द हॉट वाटर और हॉट, वी कैन से द स्टीम, राइट, या फिर हॉस्पिटल्स है, तो वहाँ पे भी क्या रहता है कि जो इक्विपमेंट्स को क्लीनिंग पर्पस के लिए दे यूज इट, ठीक है, डिसइंफेक्टर्स, राइट, उसका नाम डिसइंफेक्टर्स में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो दे हैव द स्मॉल बॉयलर्स, उनके पास स्मॉल बॉयलर्स होता है, ठीक है। सो दीज स्मॉल बॉयलर्स कम इनटू द कैटेगरी इफ द कैपेसिटी, और पहले आपको बताता हूँ थोड़ा सा, इसका एक स्टोरी बता देता हूँ कि पहले वो जो लिमिट था ना, वो लिमिट था शायद 125 का था, 125 लीटर का था, और उसको भी कुछ रिसेंट, मतलब इधर लास्ट 5-6 ईयर्स का जो रिसेंट जो अमेंडमेंट आया ना, उसमें उसको चेंज करके शिफ्ट टू द 500 लीटर, कि भाई 500 लीटर्स के ऊपर आएगा, देन
it consider as the IBR boiler, small boiler under the IBR boiler, right? तो अब यहाँ पे लूप होल क्या होता है कि जो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, तो वो दे डोंट वांट टू कम और फॉलो द IBR, वो फॉलो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? सो व्हाट दे डू, उनका रिक्वायरमेंट देखता है कि भाई 500 लीटर का है ना, तो समटाइम्स व्हाट दे डू, दे मेक इट द 490, या बहुत बार ऐसा होता है कि भाई देखता है कि नहीं अभी इतना से काम नहीं चलने वाला है, सो व्हाट दे डू, दे install the two boilers, one is considering the 300 and other considering the 200 liter, right? तो ये छोटी जो चीजें हैं ना, वो भी हमें थोड़ा बहुत मतलब ध्यान में रखना है कि भाई पहले क्या हो रहा था, अभी हमारा लेटेस्ट इंडस्ट्री में, बिकॉज राइट नाउ यू ऑल आर, आई कंसिडर ऑल यू आर द बॉयलर इंस्ट्रक्टर, तो भाई अभी आपको सब कुछ ऑन एवरी एस्पेक्ट यू हैव टू नो अबाउट दैट कि भाई क्या हो रहा है, हमें कैसे इसको आगे करना है, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट मूव ऑन। हेलो सर, यस यस एक यस, डाउट है। जो जो 100 लीटर वाला कैपेसिटी है ना, जो हॉस्पिटल में जो डिसइंफेक्टर के लिए यूज करते हैं ना, उसमें बिलो 100 लीटर है। और जो स्मॉल इंडस्ट्रियल बॉयलर है ना, उसमें 7 kg से कम प्रेशर और 25 लीटर से 500 लीटर वाला कैपेसिटी है स्मॉल इंडस्ट्रियल बॉयलर में। नहीं और जो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो 100 लीटर वाली, वो हॉस्पिटल में जो डिसइंफेक्टर यूज होता है वो 100 लीटर से कम है, तो वो IBR में नहीं आता है फिर। नहीं उसी चीज को मैं बता रहा हूँ अभी, शायद उसको अभी मैं जस्ट आपने बहुत यू पुट इट द वेरी द गुड क्वेश्चन, मैं आपको इसका अपडेट दूंगा एंड आई विल आल्सो शेयर द व्हाट द रेगुलेशन इट कम्स, ठीक है ना, और कब उसका अमेंडमेंट आया। आई थिंक उसको भी उन्होंने कुछ चेंज किया है, जो इंस्पेक्ट जो हॉस्पिटल में हम जो यूज कर रहे हैं ना, उसको भी अभी चेंज हुआ है। सर मेरा क्वेश्चन था कि वो बॉयलर पासिंग हर साल में करवाना जरूरी हाँ, आते हैं, उस पर आते हैं, ठीक है इस सेशन में है वो क्वेश्चन आते हैं। ओके अंकुर, तो ठीक है, मैं आई जस्ट नोट डाउन इट, ठीक है? सो आई विल शेयर द रिलेवेंट द थिंग्स अबाउट दैट, ठीक है? कि भाई अभी वो भी शायद जो उसको 500 लीटर तक किया है, ठीक है? क्योंकि पहले शायद वो भी 100 लीटर तक ही था। चलो ठीक है, मैं उसको अपडेट करता हूँ। ओके, सो ये पार्ट हमारा हो गया, ठीक है? ओके, नाउ अभी इसके अलावा कुछ और डिफिनेशंस है जो बहुत इजी है। दैट इज द कॉम्पिटेंट पर्सन, मींस a person recognized in such a manner as may be prescribed by the regulation for inspection and certification of boiler and boiler component during the manufacture, erection and uses. All inspector shall be आईपीएसओ फैक्टो कॉम्पिटेंट पर्सन, यही चीज मैं बोल रहा था कि भाई वो बाय डिफॉल्ट क्या है, वो कॉम्पिटेंट पर्सन है। देन द डेफिनेशन ऑफ द इकोनोमाइजर में बी एनी पार्ट ऑफ द फीड पाइप which is wholly and partially exposed to the action of the flue gases for purpose of recovery of wastage. The feed pipe means any pipe connected fitting wholly and partially under the pressure through which the feed water passes directly to the boiler, which does not form any integral part thereof. Inspecting authority means institutions that may be prescribed by the regulations for inspection, certification of boiler and boiler component during the manufacturer. All यहाँ पे यही चीज लिखा गया, all inspector of the boiler shall be IPSO facto इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी। यही चीज मैं पहले बताया था कि ठीक है कि वो बाय डिफॉल्ट वो क्या है, इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी है। देन छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल हैं कि मैन्युफैक्चरर मीन्स मैन्युफैक्चरर कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेशन ऑफ बॉयलर एंड बॉयलर कंपोनेंट। मैन्युफैक्चरर मीन्स ए पर्सन एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ओनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार इसमें रहता है, बीओई में भी रहता है और कहीं पे भी रहता है कि भाई व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द बॉयलर ओनर, हु वी कैन से द बॉयलर ओनर। सो इसके लिए जो है मार्किंग किया हुआ है 14 मतलब सेक्शन 14 में उसके बारे में बताया है। Any person possesses
or using a boiler as the agent of the owner thereof, any person using a boiler which has been hired or obtained on loan from the owner thereof. ठीक है, मतलब अगर ओनर ने उस बॉयलर को चलाने के लिए किसी भी पर्सन को अगर रखा है, सो दैट पर्सन गोइंग टू बी कंसिडर एज द ओनर। ठीक है, बराबर। ये हो सकता है कि वो उसको हायर्ड हो या उसको लोन बेसिस पे भी उसको रखा हो। मीन्स लोन करने का मतलब यहाँ पे ये गवर्नमेंट का लैंग्वेज है, मीन्स द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बेसिस पे रखा हो, है ना। जैसे बहुत जगह पे अभी आप देखते हैं कि भाई जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल ऑफ द वेदांता, सो वेदांता जो है क्या है, वो पूरे प्लांट का ओनर है, बट उन्होंने फॉर रन द इंटायर सिस्टम ऑपरेशन मेंटेनेंस दे हैव एग्रीमेंट विद द स्टेट। तो उन्होंने सारा चीज किसके साथ रखा है, एग्रीमेंट किसके साथ किया है, स्टेट के साथ किया है। तो वहां पे क्या कहेंगे कि भाई स्टेट है। ठीक है, दूसरे वर्डिंग में आते हैं कि भाई एक ओनर है ना, जैसे जिंदल है, रिलायंस है, टाटा है, बट दे हायर पीपल लाइक यू एंड मी टू रन द बॉयलर, है ना। तो उसमें एजीएम होगा, डीजीएम होगा, जो भी होगा, है ना। सो दीज आर कंसिडर ऑल्सो एज द ओनर। तो ये दो 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 पार्ट है, दो मीनिंग है। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर कि एक में ओनर ने किसी के साथ एग्रीमेंट करके उसको बॉयलर को रन करने के लिए, पहला चीज है कि यहाँ पे जो वर्ड्स लिखा है ना, इंक्लूडिंग एनी पर्सन पोजेसेस, पोजेसिंग माने उसको चला रहा है, चलाने के लिए, यूजिंग ए बॉयलर, बॉयलर को चला रहा है एज द एजेंट ऑफ द ओनर, या तो उसको हायर्ड के रूप में होगा या एग्रीमेंट के बेस पे होगा। सो दे आर कंसिडर एज द ओनर, राइट। Then बहुत बार we are use the words of in the IBR, that is the prescribes, means to prescribed by the regulation and rules made under this act of 2025। अब हम बात करेंगे केवल 2025। ठीक है, स्टीम पाइप मीन्स एनी पाइप विच इज थ्रू विच द स्टीम इज पासेस, एंड उसका वो कंडीशन है कि भाई इसमें प्रेशर जो है 3.5 एंड उसका जो डायमेंशन होना चाहिए 254 होना चाहिए। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड द नोमेनक्लेचर ऑफ बॉयलर। ठीक है ना, ये बेसिक चीज है, बट हम थोड़ा अपने सेशन में थोड़ा प्रैक्टिस करा देते हैं कि भाई आप एट एनी टाइम, भाई आप सो के उठे हो या जिस हाल में हो, these things you have to be always remember। क्योंकि मैंने बोला ना, now you feel you are the boiler inspector, तो आपके बॉयलर का द नेम, ईयर, बॉयलर रजिस्ट्रेशन नंबर, बीएमसीआर, रेटेड प्रेशर, टेम्परेचर, काइंड ऑफ द फ्यूल यूज्ड, राइट, टाइप ऑफ द बॉयलर, आपको एकदम इंस्टेंट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलो फटाफट ये हम देखते हैं कि हु इज गोइंग टू राइट करेक्टली। ठीक है ना, करेक्टली होना चाहिए with the list time and share in the group quickly। ठीक है, ये छोटा सा एक्टिविटी करते हैं, क्विकली एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, आपको क्या लिखना है, बॉयलर का मैन्युफैक्चर, जस्ट राइट, टेक द पेपर एंड पेन, राइट बॉयलर मेक, ईयर, बॉयलर रजिस्ट्रेशन नंबर, बीएमसीआर, प्रेशर, टेम्परेचर, टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड एंड टाइप ऑफ द बॉयलर। क्विकली राइट एंड पोस्ट इन द ग्रुप क्विकली। देखता हूं कि हु इज गोइंग टू राइट द करेक्ट। Just in 2 minutes. Now let's give you the 3 minutes. Now the time is 57. Just quickly, quickly, quickly.
Yes, 2 minutes is left right now. Quickly, please do it. Please share quickly. Just 1 minute is left out. Do it quickly.
So let's check it. Okay, so next to move to the next one. Yes. So next part is this. These are very simple things. Who are the doctors? So generally we call the boiler inspector is the doctor, right, for the boilers. And one more thing, just I'm going to update that if we talk about the entire India, so we have more than 60,000 boiler. And if we talk for the only the state for the Gujarat, so right now we have more than 15,000 IBR registered boilers. Okay, so just moving to the little bit fast. Okay, so one more a small activity we are going to do it here, right? Okay, so here what everybody is observing, this red side one safety valve is there, right? Which is placed on the header, and this side is also one safety valve is placed. Okay, so in the green color, right? बट यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो उसकी जो स्टब का जो हाइट है ना, बराबर, वो ज्यादा है और यहाँ पे कम है. सो विच वन इज द करेक्ट एंड व्हाई? क्विकली. यस, क्विकली. देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम जहां पे भी सेफ्टी वाल्व इंस्टॉल करते हैं ना, तो देयर इज सम स्पेसिफिक बट वी कैन से द मेंशन द डायमेंशन इज अबाउट दैट. इट शुड बी अप टू द हेडर, इट शुड बी द 250 mm, है ना. 250 mm तक हमको रखना है. अगर इससे ज्यादा रखेंगे सो क्या हो सकता है, अगर ज्यादा इसका हाइट रख रहे हैं सो क्या होगा, इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा? यस, एनीबडी कैन टेल. यस, अगर आपका सेफ्टी वाल्व के ऊपर अगर हमने इसका जो लेंथ है ज्यादा करके रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? क्विकली. यस, एनीबडी प्लीज. यस, तेरांग, अंकुर, आवेश, जैमिन, विपुल, यस, निधि, उत्सव. देखो अगर आप ज़्यादा रखते हो ना, तो इसमें क्या होता है कि बहुत बार आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपका जो सेफ्टी वाल्व का सीट है ना, वहाँ पे चेंटरिंग हो रहा है, मतलब कंडेंसेट डेवलप हो रहा है. ठीक है, तो जब आपका कंडेंसेट कंटिन्यूस डेवलप होते रहेगा तो वो सेफ्टी वाल्व को क्या करते रहेगा, एक प्रेशर हमेशा उस पर एग्जर्ट करते रहेगा. इसलिए सेफ्टी वाल्व थोड़ा सा उठेगा, फिर वो बैठ जाएगा, राइट. इसीलिए ऑलवेज वी प्लेस द सेफ्टी वाल्व एट द हेडर या ड्रम पे जहाँ पे भी रखते हैं. सो वी कैलकुलेट द प्रेशर ड्रॉप, है ना. क्योंकि आपका क्या होगा, प्रेशर जो ड्रॉप होगा इस मीन्स क्या होगा, वो दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म इनटू द कंडेंसेट. ठीक है ना. तो वो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो है चैटरिंग स्टार्ट होगा. तो अवॉइड द चैटरिंग वी ऑलवेज मेंटेन दैट स्पेसिफिक डायमेंशन. चलो नेक्स्ट पार्ट में अब आते हैं. नाउ
अब यहाँ से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है, दैट व्हाट इज द थिंग इज मेंशन इन द regulation. So this is very important about the inspection and certification of boiler, right? It is mandatory as per the Central Boiler Board, right? So what we do, we define the standard for the product design, construction as well as the inspection methods. ठीक है ना? तो कैसे करना है? So उसमें क्या क्या steps है? So all the steps I'm going to mention here. So first thing is about क्या होता है? Design review, है ना? डिजाइन रिव्यू आएगा. सो डिजाइन रिव्यू में क्या आएगा कि सपोज यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश वन बॉयलर, सो व्हाट यू हैव योर ऑल योर आईबीआर ड्राइंग्स अप्रूव, जो भी जिस स्टेट से किया है वो उसका अप्रूवल ड्राइंग्स वी आर गोइंग टू सबमिट टू द सीआईबी, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर्स. ओके, सो वहां पे वो ड्राइंग्स अप्रूवल के बाद देन वी स्टार्ट द स्टेज वाइज इंस्पेक्शन. सो स्टेज वाइज इंस्पेक्शन में द फर्स्ट स्टेज विल कम्स टू द मटेरियल इंस्पेक्शन. जैसे मान लो आपके पास उधर साइड से बॉयलर की ट्यूब्स आ गई, वाटर वॉल पैनल आ जाता है, then you have to do the inspection part of the metallurgy, and inspection part of the metallurgy is also we will do it with a certain रूल्स विद द सर्टेन फॉर्मेट. तो वो मटेरियल इंस्पेक्शन कैसे करेंगे जस्ट मैं अभी अपडेट करूंगा. देन आता है आपका स्टेज इंस्पेक्शन. सो स्टेज इंस्पेक्शन में क्या होगा दैट फर्स्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द योर मटेरियल इंस्पेक्शन वी स्टार्ट डू द इरेक्शन. सो इरेक्शन में क्या होगा, फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रल हाइड्रो. मेनी टाइम्स यू हैव हर्ड द वर्ड ऑफ द इंटीग्रल, राइट? मतलब अप टू द जो भी स्टीम है, हेडर्स है, गेज ग्लास है, लेवल गेज है, तो उसका जो पाइपिंग का स्टब का जो फर्स्ट आइसोलेशन तक का पार्ट है दैट कॉल्ड द योर इंटीग्रल हाइड्रो. तो उसका हम प्लानिंग करते हैं तो इंटीग्रल हाइड्रो वी हैव टू कंप्लीट इट. ठीक है, देन इंटीग्रल हाइड्रो कंप्लीट होता है तो उसके बाद वी कैन से और वी कैन प्रोसीड फॉर द प्रोविजनल ऑर्डर, है ना? सो दिस प्रोविजनल ऑर्डर इज गोइंग टू वैलिड फॉर ओनली फॉर 6 मंथ. तो उसके लिए क्या क्या चाहिए वो भी नेक्स्ट में मैं बताता हूँ. ठीक है, देन योर आता है वेल्डर सर्टिफिकेशन. सो वेल्डर सर्टिफिकेशन ऑलरेडी टोल्ड दैट वेल्डर मस्ट बी पोजेसेस द फॉर्म 13 and this form is going to be signed by the chief inspector of boiler, and this certificate is only going to valid for the 1 year. नेक्स्ट ईयर के लिए उनको फिर क्या होता है रिन्यू करना रहता है. Then in service inspection and certificate renewal, so that is your open inspection करेंगे, then we do the hydro test and with this satisfactory result we can proceed. सो एक छोटा सा एग्जांपल हमने आपको दिया एचआरएसजी का प्रेशर पार्ट का. ठीक है, मल्टी प्रेशर एचआरएसजी में क्या रहता है कि वी हैव द मल्टीपल प्रेशर वी कैन जनरेट इट, बट अपार्ट फ्रॉम अदर कन्वेंशनल बॉयलर we only have the single pressure generator. ओके, सो पहले फर्स्ट पार्ट में आता है डिजाइन और ड्राइंग अप्रूवल. हाँ, सो इसमें कैसे होगा, सो क्वालिफाइड डिजाइन इंजीनियर प्रिपेयर द जीए ड्राइंग, इंटायर द बॉयलर सेक्शंस व्यू. ठीक है ना, स्टीम पाइपिंग स्ट्रक्चर कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूटरी कोड्स, आइदर इट इज गोइंग टू फॉर्म्स टू द, अगर आईबीआर वाला पार्ट है तो आईबीआर के थ्रू होगा, नॉन आईबीआर पार्ट है तो इट कम्स टू द एसएमई के थ्रू, हम उसके सेक्शंस के थ्रू उसको ये करेंगे. देन डॉक्यूमेंट पैकेज इंक्लूड्स ऑल, जो आपका आईबीआर का है उसका जो वेल्डिंग्स के जो हैं, डब्ल्यूपीएस के जो रिजल्ट हैं, देन वी विल करेक्ट इट. उसमें फॉर्म 3A भी आएगा, 3B आएगा. सो व्हाट इज द फॉर्म 3A 3B? इट इज जस्ट अभी आपको बता दे रहा हूँ, दैट इज फॉर योर ट्यूब्स के लिए और अपना कास्टिंग के लिए जो भी जो फॉर्म्स रहता है वो दैट वी आर गोइंग टू इंक्लूड, and that entire detail we are going to share to the local boiler office, and that local boiler office is going to the further to the move for the CIB, राइट? सो यहाँ पे इनका पर्पस क्या होता है कि पहले ये ड्राइंग देना है जो इंटरनल हाइड्रो का है, एसआर का है, ये सब कंप्लीट करना है. देन CIB is going to register or allocate the your registration number, right? Okay, so that is very important part. ठीक है, right? So
अप्रूविंग अथॉरिटी कौन सा हो गया, CIB हो गया, या डायरेक्टर ऑफ बॉयलर्स इज द अल्टीमेट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फॉर कंप्लायंस अंडर द सेक्शन, ये 1923 की जगह पर नाउ वी विल यूज द 2025 बॉयलर रूल 2025, ठीक है ना। अदर थर्ड पार्टी एजेंसी जो है जैसे कि LRQA है, TV नॉट है, ब्यूरो वेरिटास है, दे ऑल्सो परफॉर्म द प्राइमरी डिजाइन रिव्यू एंड दैट फाइल फॉरवर्ड टू द CIB। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है तो CIB उसको क्या करता है कि थर्ड पार्टी को पहले रिव्यू करने के लिए दे सबमिटेड एंड देन दे विल मूव ऑन, ठीक है। इंटरनेशनल के लिए भी यूज द ASME कोड्स और PED कोड्स को भी हम यूज करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंट में क्या हुआ सिलेबस में ये चीज़ को ऐड किया गया है, राइट। तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे कि भाई कोड्स क्या क्या है, इंटरनेशनल कोड्स क्या है एज पर SIN स्टैंडर्ड, ठीक है। देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द ड्रम्स, तो ड्रम्स को हम कैसे बनाते हैं, तो आइदर वी मूव टू द फॉर कोल्ड रोल और मे मूव फॉर द हॉट वर्क, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि आपका हम ड्रम्स के लिए करेंगे, सो इट इज नॉट गोइंग टू मेक द ऑन द सिंगल प्लेट, सो हियर वी आर यूजिंग द मल्टीपल प्लेट्स को यूज करेंगे। सो देन वी हैव द मल्टीपल द सी सीम एंड एल सीम, ठीक है। सी सीम्स रहेगा और एल सीम रहेगा, सर्कमफ्रेंशियल सीम एंड लॉन्गिट्यूडनल सीम्स विल बी कम। अभी मान लो कि मल्टीपल प्लेट्स है तो IBR में नॉर्म्स है कि एक ही जगह पे दो कंसिक्यूटिव सी सीम्स नहीं आने चाहिए, ठीक है, उसी पे वो नहीं रहेगा। सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल सीम्स का जो पोजीशन है ना, ठीक है, वो उसी प्लेस पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। देन योर आएगा नेक्स्ट इज योर यू विल गेट द थिंग्स इज अबाउट द मटेरियल इंस्पेक्शन। सो मटेरियल इंस्पेक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर दैट इसके लिए भी मेरे पास बहुत सारा मटेरियल्स है और डेटा है, दैट आई विल शो यू कि भाई प्रैक्टिकल केस में कैसे करते हैं, उसका हमारे पास फॉर्म भी है, ठीक है, जो हमने दूसरे दूसरे फ्रेंड्स को दिया है वो भी मैं आपको शो करूंगा। बट हियर जस्ट यू वन थिंग इज नोट, उतना डीप में अभी जाने की जरूरत नहीं है ना। अभी जस्ट यू हैव टू नो अबाउट दैट वी डू द मटेरियल इंस्पेक्शन, एंड मटेरियल इंस्पेक्शन में क्या चीज आपको मेन चीज देखना है। सो फर्स्ट थिंग्स यू हैव दैट नो एनी मटेरियल शुड नॉट बी हैव द डैमेज, ठीक है ना, कोई पहले से कोई डैमेज होकर नहीं आना चाहिए। दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल्स, राइट, मटेरियल इंस्पेक्शन का। देन द ऑफर मटेरियल, जो ऑफर मटेरियल होगा उसके पास फर्स्ट वी विल डू रिक्वेस्ट फॉर द क्लीनिंग, या वो क्लीनिंग करके रखा होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या आएगा कि वी विल सी द रिजल्ट्स ऑफ दिस पाइप्स ऑफ केमिकल एनालिसिस का ऑफ, तो उसको हम क्या करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू कंपेयर विद IBR फोल्डर, IBR फोल्डर के साथ उसको हम कंपाइल करेंगे और उसको हम चेक करेंगे दैट विद द हिट नंबर, कि भाई उतना जैसे लॉट है, एक लॉट में सपोज 50 वी कंसीडर द 50 पाइप्स है, तो क्या करेगा कि भाई वो पर्टिकुलर हिट नंबर का जो 50 ट्यूब्स के लिए है असाइन किया गया है, दैट कुड बी द सेम एट रीच एट साइड, जो साइड पर आया है उसके साथ वो मैच होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा IBR का जो इसका इंस्पेक्शन है, दिस इज व्हाट वी कैन से द वन बिग ड्रम दे हैव मैन्युफैक्चर, सो टोटल लेंथ इज द 10.4 meter, so this is for the Tamil drums manufactured by the NIPCO and NIPCO Tripura के लिए। And now we move for the procedure for following the boilers। बॉयलर्स के लिए क्या क्या है, तो उसमें भी उनको क्या चाहिए कि भाई जब आप इसके इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं, देन यू मस्ट हैव टू रेडी ऑफ द फॉर्म 2, फॉर्म 2 or form 13, form 3, 3A, 3B, 3C, that is must. Then also the form 4 and 4A. So form 4 related to your registration. Then drawings and other dispatchable, what are the things are there, that all are we are going to show to the CIB through the
असिस्टेंट डायरेक्टर। तो पहले क्या जाएगा, असिस्टेंट डायरेक्टर के पास जाएगा, देन इट मूव टू द CIB। देन थर्ड इंस्ट्रक्शन हो गया जाकर, देन स्टेज इसमें IBR का भी हमने बता दिया कि वेल्डर के लिए क्या होगा, वेल्डर सर्टिफिकेट दैट शुड बी द वैलिड होना चाहिए, दैट मेडिकल एज पर द रिलायंस मेडिकल भी उसका कंप्लीट होना चाहिए, देन ही कैन एडेप्ट फॉर द योर IBR वेल्डिंग एंड सर्टिफिकेशंस। देन लास्ट में आएगा इन सर्विस इंस्पेक्शन एंड द सर्टिफिकेशन, तो दैट वी कैन डू इन प्रेजेंस ऑफ द एनी CIB or chief inspector of boilers, right? And we take the form 1 entry, we will put all the entry, and now we are submit to the same to the boiler inspector. These are the some photographs where we have worked, and this is just add for the just showing, क्योंकि बहुत लोग का यहाँ पे गलती हुआ है कि भाई प्रोविजनल ऑर्डर कैसा दिखता है। दिस इज द current look of the your next. So this is as per the IBR, this is form 4। so form 4 में क्या होता है, we put the initial all the details, but form 6 में क्या रहेगा कि that will have your only the approval from the IBR office, or if you are doing from the come as a competent person, so that in that case you can do it. Now the report of the accident, what are the if anything else has accidents in the plant, then how we can do it and what is the rules and regulation. So if any accidents occur to the boiler, regulation 52 or boiler component, the owner and person in charge, they shall within the 24 hours of the accident report the same in the writing to the inspector, उनको लिख करके देना है क्या हुआ था। Every such report shall contain a true description of the nature, accident and journey. This, if any cause difficulty to get the detail and enable the inspector to judge the gravity of the accident. So ये क्या बोल रहा है कि आपको 24 hours में you have to submit the accident report, and at first sight what are your observation and your approach to deliver. The every person shall be bound to answer truly to best his knowledge ability to every question put in the writing by the inspector as to the cause and nature and extent of the accident. Then little bit thing I'm just going to brief about the steam test, because steam test is also important, and in the regulations it is mentioned the regulation 390, so 380, so 380 is going to talk about the approval, housekeeping, availability of the manpower, then also the need the signature of the authorized person, right? So in that case what we will do, we will just pop up the safety valve. So for that, if it is what we can say, if it is not going to be possible to isolate, then we can call the system, is called the travel testing, to do the travel testing regularly. Then we have the steam test. So steam test के लिए that वो आपका mention है कि blow down कितना रहेगा, that should be less than the 10%, ठीक है, and 5% is also the accumulation charges. Rest is the sizing of the safety valve. So this is very important. For sizing के लिए what we will do, root under to the Ag into Cp into Cl, through which we can calculate the size of the safety valve, right? So कितने साइज का मिनिमम बोर होगा और कितने साइज का मैक्सिमम बोर हो सकता है, so that we can identify, and also we can calculate the from back side
the entire the pressure drop here. Yes. So one more thing is about the engraving of the self register number. ये बहुत important है. क्या था कि एक जगह पे we have the n numbers of the boiler, but वहाँ पे GT number जो है उन्होंने miss कर दिया था. Don't mention the GT number. So for that the huge penalties occurred. These are some part which is regularly asked in the IBR. That is the what is the minimum length of this visible your level gauge. So for that it is always your the 200 mm and the side is your 0.75 inch as the interval we have. So यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट हम आपको सर्टिफिकेट दिखा देते हैं. So can it move. So in regulation 394 that is mentioned for the steam pipe. So in the steam pipe we always take the form 3A, right? Form 3A we will take it. Okay. Then 3A inspection during the construction pipe for variation for various industries. 3B issue the tubes. 3 the person during the such the tubes. And form B issue for the tubes. So form B the certified for during the construction of the tubes which has been variation from a standard condition has been permitted. Then form 3C is for the castings, not for the mounting and fitting, and D for the manufacture and test. Then another part for the form and the purpose, right? So signature by the maker and inspecting authority. तो यहाँ पे अलग अलग फाइल्स के लिए जो कि हम डिटेल में भी करेंगे. यहाँ पे these files are what is the things and what we can do for the next of the session, like the for your form 4. So form 4 is for your we can dedicate it, say that this is your provisional order. So these are the very much important for your boiler IBR compliances के लिए. So registration, first is the registration, then provisional order, then your form 6 you can use it, then open inspection and hydro test yearly we can do it, and if there is any we can say the breach of rules, then we have to face the penalties. Now very much important about the regulation 7. So regulation 7 is talk about the registration, boiler registration number, and this is going to have the some details when first we have to submit the all the documents to the local boiler office and he will get the approved from the central, right? Then all other jobs as may be assigned by the power sector council. Then provisional order. So this is what we can say going to start on the notes that some portions, some works are pending, but right now we are going to start the thing. So for that the provisional order is important, and this is only the certificate which is only going to valid for the 6 months. Another 6 months we have to issue the another provisional order which is going to be the completion of the entire the commissioning activity. So that's why this form this your is important. Then certificate 8A that is going to talk that in what condition your boiler is going to be seized. So these are the structures things are there, and elevation and rewards of the boilers. So that already I have shared, like report of accident that is yeah. Yes. Now this part is very important. That is we are going to discuss about the penalty of the illegal use of the boiler. At what condition you can say that this is are the illegal, right? So here which 2 points I have mentioned. There are so many the rules are mentioned about that, but I'm just going to pick the recent 2 issues
to use the boiler without the certificate or provisional order, तो भाई without के बिना तो नहीं हो सकता है. This is the compulsory that you have to be taking. Then in other parts, the boiler uses at the high pressure. This is also offensible, and you can get the apart from that, some other cases are also there, like the boiler owner failed to engrave the registration number. अगर boiler के ऊपर registration number नहीं है, so this is also going to be considered as the penalty of the breach. ठीक है? So for that we are going to some charges. Then we have the September 13. So authorize the steam and pipe network that is going to be completely soon, and we are going to upload in the portal. So this is what we can say. This is the little bit the brief about all the thing. Here just I would like to show some videos of the boiler explosion. So I think I have to start. On 1st November 2017, the NTPC had its biggest accident ever when a boiler furnace exploded at the Unchahar thermal power plant in Uttar Pradesh. The death toll from the explosion has risen to 37, while more than 80 people have been seriously injured. Sources say that unit number 6 of the plant, where the boiler exploded, was put under commercial operations hurriedly on 30th of September 2017, when even the trial operations were not over. It is alleged that the hurry was because the Prime Minister was supposed to inaugurate the unit on 9th November. The question is, how could this boiler explode when both the BHEL, which built the unit, and the NTPC are familiar with these units for the past 40 years or more? Let us look at the sequence of events leading to the blast, as pieced together